Hi, everybody. This is Amritansh, and welcome to Platonic. 15 days to go for your Civil Services Mains exam 2023. I know you must be very anxious. Kitna kuch pada hai. There's so much I wanted to do. I was not able to do. There is this test is pending. That is pending. This is normal. This happens every year. This happens to the best of us. So number one, tell yourself that your anxiety is normal. I know I'll be talking to two set of students. One who has already attempted mains. So you are relatively, you know the drill. But there are some of you who are writing the mains for the first time, okay, and you perhaps will feel almost lost in some cases. Maybe optional शायद नहीं हो पाया है, optional is giving you shivers, or perhaps GS 1, 2, 3, 4, any of the papers you have not done that well. एंड ऐसे में इतना कुछ पढ़ लिया है, देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रैटेजी यू हैव रेड कि अब यही नहीं पता कि फाइनली ऐसे में लिखना क्या है. वी ऑल हैव बीन देयर, ओके, बट at least I will share you my experiences and journey. So how to manage time in the last 15 days, because trust me, it is the time which is the king, and it is your time which is going to make or break. Okay, so number one, every day, okay, I will say, devote some time for reflection. What do I mean by that? That oftentimes when we are at the fag end, जब हम एग्जाम के एकदम पास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने शेड्यूल को बहुत ज्यादा क्रैम कर लेते हैं. वी जस्ट कीप ऑन एडिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. You should do what you should do, at least for mains. For prelims, at least slogging is fine because you have to cram facts. Mains के लिए your mind should be relatively free. जो भी एनालिसिस करनी थी, जो पॉइंट समझने थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ दैट हैज बीन डन. यू स्टिल हैव सम 15 डेज टू डू. यू कैन ब्रश सम ऑफ दोज एस्पेक्ट्स, बट आई विल से रिफ्लेक्शन के लिए टाइम डालो. रिफ्लेक्शन के लिए में क्या करना है, हर दिन टेक सम ऑफ द टॉपिक्स रैंडमली फ्रॉम आइदर जीएस और ऑप्शनल. सिट डाउन एंड थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन. यूजुअली व्हाट हैपेंस, बिकॉज वी पैसिवली रीड सो मेनी पीडीएफ्स, सो मच ऑफ कंटेंट, जब हम लिखने बैठते हैं, हमें याद ही नहीं होता हमें लिखना क्या है. So my idea is focus on structuring. How you can do that? You can do that by reflecting. Take a piece of paper, think of any topic. Let's say it's G20, it's BRICS, or let's say it's anything related to Indian economy, de-dollarization. Okay, any of the topic. Socho, what was the context? How can you introduce that? Let's say everybody's talking about climate change. How will you introduce climate change? So there are these small things that I want you to make note. So number one is reflection. Second thing is that I think many of you have already given your mocks. You've seen the previous question. Now is the time to internalize your mistakes. Okay. So for example, I'll give you my example. Many times when I used to write answers, I would not, let's say, write a lot of conclusions. Okay. So I deliberately wrote that as a point कि हाँ, अब मैं जब भी लिखूंगा मैं conclude जरूर करूंगा. Sometimes when I did not draw enough diagrams or my presentation was very monotonous. So I deliberately made that a point that I will write these things down. So my point is internalize your mistakes. Okay. Otherwise you will often, like फिर से वही repeat करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है, बार बार you are spending so much of money on getting your answers evaluated, writing a test, etc. So from mocks and previous questions, make the best use of it. Fine. Now, one by one, I'll tell you from essay to GS to optional, but I will start with optional first. Why? Optional में you have a 5 days break. Okay. Now what you should do, and often what happens is last के 15 दिनों में हम सिर्फ GS देखते हैं, हम सीधे last के 5 दिन के लिए we leave optional because we think okay 5 days is too much, हम 2 बार revise कर देंगे, and that will not happen. I'm telling you right now. What you should do, at least till 7th, I'm giving you 1 week exclusively for, let's say, essay और GS के रिवीजन के लिए. What you should do, अभी भी जो मेजर पोर्शन है ऑप्शनल के, मार्क इट डाउन सो दैट व्हेन यू स्टार्ट इन दोस 5 days यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि पढ़ना क्या है. देन यू डोंट रन अवे आफ्टर. अच्छा, मेरे को आई हैव टू सी दिस मॉक टेस्ट, आई हैव टू सी दिस सोल्यूशन, आई हैव टू सी दिस, लेट्स से व्हाटएवर इज योर सब्जेक्ट. सो व्हाटएवर इज टू बी डन ऑन 7th और 8th ऑफ सितंबर, टेक अ फोल्डर, सब कुछ पैक करके अच्छे से रख दो सो दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट एंड यू आर एबल टू सेव योर टाइम. फाइन. ऑप्शनल के लिए आई विल स्टिल से यू हैव टाइम, एंड यू कैन ऑल्सो डू अ मॉक ड्रिल. Okay, I think this is the time when a lot of students go for mock tests from, say GS1, GS2, they give GS3, GS4 on consecutive days. Similar drill can be done in the first week of September for your optionals as well, whatever is your optional. If you're getting that facility, do that. Okay, that is helpful. Now coming to GS. Okay, Abhi, you know that to get an interview call and also to finally get selected, a score of roughly 400 plus is needed. Okay. Now what happens in many times, especially last wale phases mein, that you give a mock test.
आपके दिमाग में है कि यार मेरे को 400 लाने हैं, सो रफली 100 मार्क्स आने चाहिए, एंड यू गेट अराउंड 50-60 मार्क्स इन अ मॉक टेस्ट. ओके. And this has happened, this almost happens. I get a lot of queries. In fact, आज भी दो तीन queries इसी रिगार्ड से थे कि I gave X mock test, I got very less marks. What should I do? Should I, because this breaks your confidence, right? So what you should do, sometimes a lot of these mock tests will have very very specific questions, and and sometimes the evaluation is very strict. Okay. It is not as strict when you go into UPSC, and of course it is relative. अगर पेपर मुश्किल है, जैसे कि बहुत बार GS3 में the marking is tough, but it is tough for everybody, so don't get bothered down. Okay. Abhi bhi, if you get a low score in any of these papers, just go through the question. Maybe they've asked you a very specific bill, koi bahut specific content पूछ लिया है. So instead of losing your confidence over, let's say, any of the arbitrary marks, go for what you can gain value. Fine. और उससे ज़्यादा लास्ट के दिनों में आई विल से प्रैक्टिस मोर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. आंसर लिखने की हैबिट होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द, लेट्स से, अगर आपकी टेस्ट टेकिंग हैबिट, यूजुअली लोग लास्ट के 2 महीने में, लो 2 हफ्ते में, इन द लास्ट 2 वीक्स पीपल स्टॉप राइटिंग टेस्ट्स. So when you finally see the paper and when you write the test, it is becoming a problem, right? So the topic is also last 15 days strategy. I'm talking of time management. Your time management for the entire 15 days, okay? And time management between the papers and after the papers is as crucial. Fine. Again, if you have not written, let's say, tests in 3 hours, 20 questions, please do that. Okay. 10 markers के साथ और 15 markers के साथ, how you should manage your time. Ideally you should be attempting 15 markers पहले. 15 markers start करो, क्योंकि you have more to gain. ठीक है. अभी भी जिसको इशू है कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर बाय नाउ बिकॉज यू हैव रिवाइज्ड इनफ, सो आई विल से आपके वो ज्यादा चांसेस चीज याद होने की. अभी भी अगर राइटिंग स्लो है तो ट्राई टू फिल अप द स्पेस विद सम प्रेजेंटेशन, विद सम डायग्राम्स. इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंटायर 3 पेजेस, मे बी यू राइट 2.5 पेजेस. बट हैव अ हैबिट, एक बार कॉन्फिडेंस ले लो कि अच्छा ठीक है पेपर आएगा, आई विल बी एबल टू कंप्लीट दैट. फाइन. दूसरी चीज, इन जीएस पेपर्स यू वुड हैव ऑफन सीन GS3 और GS4 में मार्क्स कम आते हैं. उसकी एक और रीजन भी है. Let's say when the essay paper is on 15th, and many of people will start to revise essay GS1 GS2, so by the time they come to GS3, and GS3 is huge: economy, environment, let's say disaster, internal security, science and tech, इतने तो papers हैं, और उसमें भी every paper has its own breadth, right? So you are able to devote very less time. You actually revise GS3 so much, and then ultimately you are not able to revise GS4. इसलिए बहुत बार क्या होगा, we tend to write very average answers in GS4, एंड मार्क्स भी बहुत बार इसलिए एवरेज हो जाते हैं, राइट? एंड इट इज ऑफन द केस विद GS4 दैट समटाइम्स आपके मार्क्स और टॉपर्स मार्क्स में 40 से 50 मार्क्स का डिफरेंस आता है. इट इज ओनली टू पेपर्स विच हैव ह्यूज डिफरेंस. वन इज ऐसे एंड वन इज GS4. GS3 में भी रिलेटिवली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज लेट्स से टॉपर के भी अगर मार्क्स कम है, आपके भी मार्क्स कम है, इफ यू आर सीइंग द लास्ट 2 or 3 years ट्रेंड, राइट? सो if you are short on time, if you have not been able to complete a lot of GS, and that happens with a lot of people every year, focus more on writing essays, focus more on ethics, and focus more on your optionals. If you are already very good at all these things, it is always better to GS3 और अच्छा कर लो, GS2 और अच्छा कर लो. There is no limit to getting or improving more. We have seen sometimes rank 1 और rank 2 के मेंस के मार्क्स में 50-60 नंबर का अंतर होता है. Imagine the kind of difference these people are creating, and this is usually through what you write. Again, I'm telling you, it is not the number of attempts, but your presentation, that is the king. Okay. Otherwise, हर साल जो भी top 10 या top 50 top 100 में बच्चे होते हैं, वो हमेशा लास्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं. बट दैट इज नॉट द केस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर तरह से लोग होंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल दे राइट. एंड हाउ वेल दे राइट मीन्स हाउ वेल दे प्रेजेंट, and how well they present means how well they manage time before the exam, after the exam, and finally how well you manage yourself. If at the end of these days, if you let your anxiety rule you, it will not be great. Because see, even the best of the players, speakers, everybody has anxiety. ऐसा नहीं किसी के पास anxiety नहीं होगी. ठीक है? Even if you see the recent interview of Shashi Tharoor, he says that just before going to the stage, I have some anxiety, but that is good. It will help you prepare better. Okay? But if the anxiety is too much, you will become too conscious. आप सोच नहीं पाओगे exam में. This is the anxiety which also kills a lot of dreams of people in prelims. They become too self-conscious. Okay? So make sure you present better, you write better. Okay. Again, one thing, I started my talk with talking about reflection. Second, I spoke about the need to internalize our mistake. Third was
how to manage optionals, time therewhile, how to manage your GS papers, and last I will come to essay. Okay. Again, in essay, if you have not attempted two philosophical essays within 3 hours, please do that. Because see, if UPSC wants to make, अगर UPSC को पेपर मुश्किल बनाना होगा, they will ask you more philosophical topics, right? Because philosophical topics requires you to think a lot. So those of you who have humanities optional or perhaps are good in ethics, you will find it relatively easier to write those. ठीक है, तो उस पे करो. Second, have a list of consolidated examples at one place for essays. That will help you across all the papers, right? So do that. That will be very helpful. And my last tip for you will be take a piece of paper and perhaps charts. Charts रखिए अपने सामने. जो भी important frameworks, terms, committees आ रही हैं लिखिए. What I used to do, I used to create charts for each paper. Let's say GS1 के लिए मेरे पास एक चार्ट होता था, GS3 के लिए होता था. अब GS3 में मैंने कोई भी निमोनिक देखा, a mnemonic which let's say summarizes all the dimensions of internal security, मैंने लिख दिया वहां पे. इन इंटरनल सिक्योरिटी वी रीड अबाउट समाधान डॉक्ट्रिन, मैंने समाधान और उसको फुल फॉर्म लिख दिया. अब वो एक जो मेरा चार्ट है, दैट वन चार्ट ऑफ माइन विल हैव एवरीथिंग ऑन इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर, एवरीथिंग इन वन प्लेस. And this chart I will go and take to the exam hall as well. What is the benefit? Because in that 1.5 hours, that chart will effectively help me summarize all these things. So you can have so much of content within that one chart. Place and in fact, देखो अभी क्या होगा, चार्ट एकदम से नहीं बनेगा. You have 15 days. चार्ट चिपका दो वॉल पे. ब्लैंक चार्ट आपको अच्छे नहीं लगेंगे. सब में हेडिंग्स लिख लो. ठीक. टेक सम टाइम. जस्ट ट्राई टू फिल इट. परहैप्स एट द एंड ऑफ दीज डेज कुछ 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 चीजें भर जाएंगी. ठीक है. इफ यू ऑलरेडी हैव कंटेंट, इफ यू वांट टू कंसोलिडेट, बी माय गेस्ट. आज 31 अगस्त है, कर लो इस चीज को. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. जो भी थीम से कहीं कोटेशन है, लेट्स से आपको जीएस कॉपीज पे फीडबैक मिला कि यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, बार बार रिकरिंग फीडबैक है. सोशल जस्टिस में यू आर नॉट कोटिंग दिस, यू आर नॉट कोटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ है. GS2 के चार्ट में सोशल जस्टिस कहीं पे वो चीज लिख दो. सो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू शुड डू. फाइन, एंड टेक दोस चार्ट्स विद यू. बहुत पढ़ लिया. इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, लेट्स से यू आर लाइंग डाउन, जस्ट सी योर चार्ट एंड योर जॉब इज डन. Right? So these kind of small things, how you can utilize time. Perhaps you can now make an audio note. चलो मेरे को let's say poverty revise करना है, ठीक है, yes, poverty और let's say hunger revise करना है. चलो, what is the definition of World Bank? How much poverty have we reduced? Who am I going to quote? Okay. Any substantial government initiative I'm going to quote? Any good quotation I know? Any good case study from India or from abroad I know? Okay. तो इस तरह से आप चीज़ों को कंसोलिडेट करो एंड आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. अब आप देखो, ये 6 क्वेश्चन पूछ के 15-20 सेकंड या मान लो 1 मिनट में, इन 1 मिनट आई वाज एबल टू रिकॉल दैट पॉइंट. ओके. दैट इज व्हाट यू कैन डू. एंड टेक दोस टॉपिक्स. लेट्स से यू हैव अ फ्रेंड ग्रुप, आपस में डिस्कस करो. इवन इफ यू अलोन, टेक अ पीस ऑफ पेपर और योर सिलेबस, टीयर इट अपार्ट, नॉट इन वन गो बट इन प्लेसेस. ओके. In bits and pieces. That is how you conquer anything. Okay. So with that said, I think I will wrap this up. Okay, time management is very crucial. Again, to those of you who are feeling lost, if there is anything which I can do, please let me know. You can easily connect with me on my Telegram channel. The link is already shared. Okay. I have taken a lot of distress calls, especially in the last 15 days. If you feel that you need any help, any clarity on any of, let's say, GS optional, let's say, political science or essay, you can let me know. Other than that, I will wish you all the best. I will try my best to share some other snippets, some other content with you in these coming days. But for then, please keep revising. Okay. Thank you.